Hello everyone. So in this video we will study about the hemolytic anemia. Hemolytic anemia में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है. आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और इनडायरेक्ट इसी वजह से जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, उनका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ आरबीसीज कम हो जाएंगे. तो जब नंबर ऑफ़ आरबीसीज कम होंगे तो इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा. अब क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ रहे हैं तो हीमोलिसिस हो रहा है. अब हीमोलिसिस दो तरीके से हो सकता है, एक इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस और दूसरा एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस. इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, उसको अपन बोलेंगे इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस. और अगर किसी ऑर्गन के अंदर या फिर आउटसाइड दी ब्लड वेसल्स हीमोलिसिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस. इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में क्या होगा कि वेसल्स के अंदर अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो जो आरबीसी के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा. तो उसकी वजह से सीरम एलडीएच लेवल विल बी इंक्रीज्ड. और क्योंकि हीम का हीमोलिसिस हो रहा है तो हीम will be converted into bilirubin and there will be an increase in the indirect bilirubin. अब जो हीमोग्लोबिन है वो पेरिफेरल ब्लड में भी जाएगा. आरबीसी से निकल के हीमोग्लोबिन पेरिफेरल ब्लड में भी जाएगा और किडनी में भी जा सकता है. जब पेरिफेरल ब्लड के अंदर जाएगा हीमोग्लोबिन तो दिस विल कंबाइन, हीमोग्लोबिन विल कंबाइन विद द हेप्टोग्लोबुलिन. इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम. तो जब हेप्टोग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी टेकन अप बाय द मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस. देन it will be destructed in the liver और kidney. और इसी वजह से जो सीरम हेप्टोग्लोबुलिन है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा. अब किडनी के अंदर हीमोग्लोबिन जब जाएगा तो हो सकता है डायरेक्ट हीमोग्लोबिन यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाए, उसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया. अगर वो हीमोग्लोबिन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जाता है तो हीमोग्लोबिन विल बी डिग्रेडेड and it will be converted into hemosiderin and there will be the excretion of hemosiderin along with the urine and it will lead to hemosideриnuria. This was all about the intravascular hemolysis. Now coming to extravascular hemolysis. Extravascular hemolysis is mainly carried out by macrophage and monocyte system. There is an increase in indirect bilirubin because आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और हेप्टोग्लोबुलिन का लेवल या तो नॉर्मल रहेगा या फिर माइल्डली डिक्रीज होगा. नाउ कमिंग टू एग्जांपल्स. इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस इज सीन इन पीएनएच, पैरोक्सिसोमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया. Extravascular hemolysis is mainly seen in hereditary spherocytosis and both of these are present in glucose 6-phosphate deficiency anemia. सीरम हेप्टोग्लोबुलिन इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के अंदर डिक्रीज़ हो रहा था और एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के अंदर डिक्रीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. लेकिन जब सीरम हेप्टोग्लोबुलिन डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि लेकिन उसका वैल्यू नॉर्मल अपीयर होगा, तो ऐसा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में दिखता है. एंड दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. नाउ विल स्टडी अबाउट दी hemolytic anemia from Robbins. So hemolytic anemia share the following features. First, a shortened red cell lifespan below the normal 120 days, elevated erythropoietin levels and a compensatory increase in erythropoiesis, accumulation of hemoglobin degradation products that are created as a part of the process of red cell hemolysis. The physiologic destruction of senescent red cells takes place within macrophages, which are abundant in spleen, liver and bone marrow. This process appears to be triggered by age-dependent changes in red cell surface protein, which lead to their recognition and phagocytosis. In the great majority of hemolytic anemia, the premature destruction of red cells also occur within the phagocytes, an event that is referred to as extravascular hemolysis. If persistent extravascular hemolysis leads to a hyperplasia of phagocytes manifested by varying degrees of splenomegaly. Extravascular hemolysis is generally caused by alterations that render the red cell less deformable.
extreme changes in shape are required for red cells to navigate the splenic sinusoid successfully. Reduced deformability makes this passage difficult, leading to red cell sequestration and phagocytosis by macrophages located within the splenic cords. Regardless of the cause, the principal clinical features of extravascular hemolysis are anemia, splenomegaly, and jaundice. Some hemoglobin inevitably escapes from phagocytes, which lead to variable decrease in plasma haptoglobulin and alpha 2 globulin that binds free hemoglobin and prevents its excretion in the urine. Because much of the pathologic destruction of red cells occur in the spleen, individuals with extravascular hemolysis often benefit from splenectomy. Less commonly, intravascular hemolysis predominates. Intravascular hemolysis of red cells may be caused by mechanical injury, complement fixation, intracellular parasites, or exogenous toxic factors. Causes of mechanical injury include trauma caused by cardiac walls, thrombotic narrowing of the microcirculation, or repetitive physical trauma. Complement fixation can occur in variety of situations in which antibodies recognize and bind red cell antigen. Toxic injury is exemplified by Clostridial sepsis, which results in release of enzyme that digests red cell membrane. Whatever the mechanism, intravascular hemolysis is manifested by anemia, hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosideruria, and jaundice. The large amounts of free globin released from lyse cells are promptly bound by haptoglobulin, producing a complex that is rapidly cleared by mononuclear phagocytes. As serum haptoglobulin is depleted, free hemoglobin oxidizes to methemoglobin, which is brown in color. The renal proximal tubular cells reabsorb and catabolize much of the filtered hemoglobin and methemoglobin, but some passes out in urine, imparting a red-brown color. Iron released from hemoglobin can be accumulated within tubular cells, giving rise to renal hemocytosis. Concomitantly, heme groups derived from hemoglobin haptoglobin complexes are catabolized to bilirubin within mononuclear phagocytes, leading to jaundice. Unlike in extravascular hemolysis, splenomegaly is not seen. In all types of uncomplicated hemolytic anemia, the excess serum bilirubin is unconjugated. The level of hyperbilirubinemia depends on the functional capacity of liver and rates of hemolysis. When liver is normal, jaundice is rarely severe. Excessive bilirubin excreted by the liver into GIT leads to increased formation and fecal excretion of urobilin, and often leads to formation of gallstones derived from heme pigments. Coming to morphology of red cells in hemolytic anemia, certain changes are seen in hemolytic anemia regardless of cause or type. Anemia and lowered tissue oxygen tension trigger production of erythropoietin, which stimulates erythroid differentiation and leads to appearance of increased number of erythroid precursors in the marrow. Compensatory increase in erythropoiesis results in prominent reticulocytosis in peripheral blood. The phagocytosis of red cells lead to accumulation of the red iron containing pigment hemosiderin, particularly in the spleen, liver, and bone marrow. Such iron accumulation is referred to as hemosiderosis. If anemia is severe, extramedullary hematopoiesis can appear in liver, spleen, and lymph nodes. With chronic hemolysis, elevated biliary excretion of bilirubin promotes the formation of pigment gallstones or cholelithiasis. The hemolytic anemia can be classified in a variety of ways. Here we rely on the underlying mechanism. We begin by discussing the major inherited forms of hemolytic anemia and then move to acquired form that are most common or particular pathophysiologic interest. So in the next video we will study about
hereditary spherocytosis. If you like the video, then please like, share and comment with your batchmates, seniors and juniors. Thank you so much for watching.